Good morning, students. In the history class, we are discussing peasants, peasants, zamindars, and state. Today is the last topic that we are going to cover. We are going to learn about Ain-i, which was written by Abul Fazl. Okay, what this book is all about, what it contains. So we'll be learning a bit about Ain-i. Okay. Now this was commissioned by Akbar and Abul Fazl. He wrote this book. The Ain-i was the culmination of a large historical administrative project of classification under Abul Fazl. Now, this book was written at the order of Emperor Akbar. So, Emperor Akbar, he had ordered Abul Fazl to write this book, Ain-i. This was part of a larger project which was called Akbarnama. So, Akbarnama, this was the larger project. And in this project, there were basically three parts, three books. The first part dealt with the ancestors of Akbar. So it talked about Babur and Humayun. Okay, so it deals with Akbar's ancestors. The second part, the second book deals about Akbar's reign. Okay, it deals about Akbar's rule. Third was the Ain-i. Now this has got very detailed information about Akbar's administration and it's got everything. Okay. Now this Ain-i has got further 5 books. These books have been referred to as daftars. Usko daftars kaha gaya hai. Okay. They were known as daftars. These were books. Okay. Now these are the 5 daftars or the 5 books which are part of Ain-i. And Ain-i itself is part of Akbarnama. Okay, so Akbarnama वो large project था जिसके तहत और इसे 3 books लिखी गई. First book dealt with Akbar's ancestors, Humayun and Babur. The second book dealt with Akbar's rule, and this third book it had all the details. This was called Ain-i, written by Abul Fazl. Now this book itself had 5 books under it and also called daftars. Manzil Awadi was the first daftar or the first book. This was about the imperial household, about the palace, fort, the structure and the details. So all about palaces and all. If somebody wants to know, then this is the book Manzil Awadi. Okay, Manzil, as you know, structure, Awadi. Okay. Second book is called Sipa Awadi. Sipa Awadi, this word is Sipahi. You can understand from this word that this is about military. Okay, so it talks about military and civil administration. So Ain-i हमने देखा कि ये इसमें 5 daftars हैं. The Ain is made up of 5 books called daftars, of which the first 3 books describe the administration. ये जो पहले तीनों बुक हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं. फिर एडमिनिस्ट्रेशन को 3 पार्ट में ब्रेक किया गया है. दिस इज अबाउट द इंपीरियल हाउसहोल्ड, फोर्ट्स एंड पैलेसेस. दिस इज अबाउट द मिलिट्री एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. एंड थर्ड इज मुल्क आबादी. दिस इज अबाउट द फिस्कल साइड ऑफ the empire. Fiscal is monetary, finance, money. Okay. तो ये सब कुछ डिटेल के बारे में. तो पहली 3 बुक ये हैं and these are known as मंजिल आबादी, सिपा आबादी and मुल्क आबादी. ओके, तीनों अलग अलग टॉपिक्स पे डील करते हैं. The third book, Mulk Abadi, is the one which deals with the fiscal side of the empire and provides a rich quantitative information on revenue rates. वो numbers, quantity, क्या revenue rates थी, कहाँ से कितना collect होता था, वो सारे डिटेल इसमें हैं. It is followed by the account of 12 provinces. उस समय 12 provinces होते थे. Okay. And in 12 provinces का पूरा accounts इसमें है, details. Okay, so this is there in the third book of Ain-i. इसमें 2 बुक और हैं and those 2 books, fourth book अगर हम बात करें तो
इसमें कई अलग तरह के टॉपिक्स हैं. इट टॉक्स अबाउट मुस्लिम सेंट्स, also about invaders, it talks about the religion and culture. Okay, so this is in the fourth book. Last book is about what Akbar said, his sayings, his observations, whatever his thoughts were, वो सारा कुछ फिफ्थ बुक में है. इन 5 किताबों को, 5 दफ्तर को मिलाकर बनती है Ain-i Akbari. And Ain-i Akbari plus the second book about Akbar's reign and the first book about Akbar's ancestors' reign, इन सबको मिला के बनता है अकबरनामा. This project of writing Ain-i Akbari was completed in 1598. Okay, और ये 1598 अकबर का 42nd रेनल ईयर था, मतलब उनके रूल के 42nd ईयर हो चुके थे. Okay. Total, I think he ruled somewhere around 45 or 45 years. Okay, 1556 to 1605. Okay, so you can calculate if I am wrong. The Ain was part of a larger project of history writing commissioned by Akbar, and हमें detailed information about देता है, and about the court, administration and army, the sources of revenue, physical layout of the province, Akbar's empire, and the literacy, cultural and religious traditions of the people. So we can see how detailed this information is. Collecting and compiling this information systematically was an important imperial exercise. It informed the emperor about the varied and diverse customs and practices prevailing across the extensive territories. The ruler Akbar himself wanted to know everything, and ये वो information उनके लिए important थी, so that he can improve upon his rule. The Ain is, however, a mine of information for us about the Mughal Empire during Akbar's reign. It is important how to keep in mind कि ये एक state employee we can say अकबर ने कमीशन की है, उनके लिए लिखी जा रही है. तो इसमें I don't think so he will contain anything negative aspects of the rule, तो इसमें नहीं लिखे गए होंगे. तो ये एक टॉप व्यू है, बट जब इसमें डिटेल्स Ain-i Akbari के जो डिटेल्स हैं उसको क्रॉस चेक किया जाता है उस समय के बाकी डिटेल्स से, बाकी ज़्यादातर इसमें से जो चीज़ें हैं वो ठीक ही है. एंड it is important, however, to keep in mind that this is a view of the regions from the center, a view of the society from its apex. तो कोर्ट इसको एक राजा अपने प्रजा को कैसे देखता था, अपने पूरे किंगडम को किस तरह से व्यू करता था, ये वो एस्पेक्ट है. तो दिस इज अ व्यू ऑफ द टॉप, वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, जो किंग है उनके कोर्ट की नज़र में रूल कैसा था, क्या क्या उसके डिटेल्स थे. द Ain इज मेड अप ऑफ 5 बुक्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फर्स्ट बुक मंजिल आबादी, सेकंड सिपा आबादी, थर्ड वाज मुल्क आबादी, एंड फोर्थ बुक वी सी उसमें रिलीजन एंड कल्चर के बारे में. फिफ्थ बुक में है अकबर्स के जो सेइंग्स एंड ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने कहा, जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में, उनके व्यूज़ के बारे में. ओके, so this is about it, and after setting out details at this lower level, तो ये information, ये basic information आपको जानना है कि अकबरनामा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, उसके तहत 3 बुक्स थी. थर्ड बुक इसमें से Ain-i Akbari थी. Ain-i Akbari के अंडर फिर 5 बुक्स और थी, ये डिटेल्स हैं इसके बारे में. ओके, although the Ain was officially sponsored to record detailed information, जिससे कि एम्परर अकबर को ये सारी इंफॉर्मेशन पता हो और उन्हें अपने एम्पायर को गवर्न करने में आसानी हो, इसलिए प्रोजेक्ट लिया गया था. इट वॉज मच मोर देन अ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल पेपर्स. मैन्युस्क्रिप्ट हैज़ रिवाइज्ड 5 टाइम्स. इट वॉज रिवाइज्ड 5 टाइम्स. तो काफ़ी इसको डिटेल में लिखा गया, देखा गया कि इसमें कोई मिस्टेक्स ना हो. इसको 5 टाइम्स रिवाइज किया गया बाय द ऑथर, एंड इट वुड सजेस्ट अ हाई डिग्री ऑफ कॉशन on the part of Abul Fazl and search of authenticity. इसमें कोई गलती नहीं हो, इस बात को दर्शाता है कि उन्होंने इसे 5 टाइम और 5 बार इसको रिवाइज किया, इसमें चेंजेस किए. ओके, फॉर इंस्टेंस ओवर इसमें लेकिन कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स हैं.
ओरल टेस्टिमनीज वर क्रॉस चेक। ओके, ये तो बताया जा रहा है कि कितनी इसमें केसेस को क्रॉस चेक किया गया। जैसे द टेस्टिमनीज वर क्रॉस चेक एंड वेरीफाइड बिफोर बीइंग इनकॉर्पोरेटेड एज फैक्ट्स इन द क्रॉनिकल। तो किसी ने अगर ओरली कुछ कहा तो उसको क्रॉस चेक किया गया, सही पाया गया, तभी उसको लिखा गया है। जस्ट ऐसे ही किसी के कहने पर इसमें इंफॉर्मेशन नहीं डाली गई। इन द क्वांटिटेटिव सेक्शन हम देखें तो सभी न्यूमेरिकल जो डेटा है उनको वर्ड्स में भी लिखा गया। तो अगर कोई न्यूमेरिकल डेटा है, नंबर्स में इधर उधर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए उनको वर्ड्स में भी लिखा गया। हिस्टोरियंस हु हैव केयरफुली स्टडीड एन-i को जिन्होंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, दे हैव फाउंड स्लाइट एरर्स इन द एडिशन एंड इन कैलकुलेशंस में एरर्स हैं, लेकिन ये छोटे मोटे एरर्स हैं, इससे ही इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो न्यूमरस एरर्स in totaling have been detected। टोटलिंग करने में टोटल मिस्टेक्स हुए हैं। There are ascribed to simple slips of arithmetic or of transcription by Abul Fazl's assistants। तो ये लिखते समय मामूली सी गलतियाँ हो गई हैं। These are general minor and do not detract from the overall quantitative veracity of the methods। इन छोटे मोटे एरर्स के बावजूद भी N-i Akbari हमें बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है। Another limitation N में जो है वो is somewhat skewed nature of the quantitative data। इसका मतलब ये है कि डेटा यूनिफॉर्मली सभी प्रोविंसेस से कलेक्ट नहीं किया गया। एक एग्जांपल दिए गए, एंड आई डोंट थिंक सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट हियर इट हैज बीन सेड दैट जमींदार्स के कास्ट के बारे में इस N-i Akbari में है। देखिए, जमींदार्स की कास्ट हमें पता चलती है, लेकिन कुछ जमींदार्स जो कि बंगाल एंड उड़ीसा रीजन के थे, उनके कास्ट के बारे में इसमें डिटेल नहीं है। तो कहीं पर कुछ रीजन की तो डिटेल है, कुछ रीजन की डिटेल नहीं है। दिस इज व्हाट द हिस्टोरियंस आर ट्राइंग टू से। N-i Akbari में समटाइम जो डेटा है उसमें सम डेटा इज मिसिंग, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। लाइक द कास्ट ऑफ द जमींदार्स, बाकी जमींदार्स के कास्ट के बारे में मेंशन है, but the caste of the Zamindars of Bengal and Odisha region, that has not been mentioned। Fiscal data from the Subas is remarkable for its richness। Some equally vital parameters such as इसमें prices and wages, उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम है। वो ये कि डिफरेंट एरियाज के प्राइसेस एंड वेजेस इसमें नहीं लिखे गए हैं। जब प्राइसेस को बताया गया तो आगरा या उसके आसपास जो प्राइसेस थे उनके हिसाब से इसमें मेंशन किया गया है, बिकॉज दैट इज वेयर द कैपिटल वाज, एंड आगरा मार्केट्स के हिसाब आसपास जो रेट्स थे उन्हीं को मुगल पीरियड जो पूरा रूल था उनके प्राइसेस को मानकर लिखा गया है। द डिटेल लिस्ट ऑफ प्राइसेस एंड वेजेस दैट द एंड डज प्रोवाइड इज मेनली डिराइव्ड फ्रॉम डेटा पर्टेनिंग टू एरियाज इन एंड अराउंड द इंपीरियल capital of Agra and is therefore of limited relevance for the rest of the country। Okay, and को translate भी किया गया है। The original copy of N-i Akbari, I don't think so it is in India। Okay, this is no more in India, and इसमें बहुत सारे डिटेल्स थे, इसमें कई सारे मिनिएचर पेंटिंग्स थे। हर चीज़ को अच्छी तरह समझ में आ सके इसलिए कई सारी इसमें पेंटिंग्स थी। और फिर N-i Akbari को ले जाया गया, ये आई थिंक इट इज़ इन ब्रिटेन नाउ, एंड दोज पेंटिंग्स हैव बीन टेकन आउट फ्रॉम द N-i Akbari एंड फ्रेम करवाया गया। दे हैव बीन probably sold separately। Okay, so I don't think so this volume is in India anymore। Okay, this is the timeline coming of Babur and then Humayun, and Humayun was defeated by Sher Shah, and then Sher Shah को फिर रिगेन किया हुमायूं ने अपनी टेरिटरीज को। then Akbar's rule, Jahangir's rule, Shahjahan, Aurangzeb। Okay, so this is timeline we have इसमें। In this extract of Abul Fazl giving a vivid account of how and from whom he collected the information, to Abul Fazl, son of Mubarak, this sublime mandate was given: write with the pen of sincerity the account of the glorious events and of our dominant conquering victories,
Assuredly, I spent much labor and research in collecting the records and narratives of His Majesty's action, and I was a long time interrogating the servants of the state and the old members of the illustrious family. तो यहाँ पर अबुल फजल लिखते हैं कि मैंने बहुत समय बिताया, रिसर्च किया, कई लोगों के से बात की इसमें, एंड इंटरोगेट किया सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट जो workers थे. I examined both prudent, truth-speaking old men and active-minded, right-actioned young ones and reduced their statesmen to writing. कई experienced and जो old people थे उनसे उन्होंने बात की. The royal commands were issued to the provinces that those who from old services remembered with certainty or with admonition of doubt the events of the past should copy out the notes and memorandum and transit them to the court. Provinces में आदेश दिए गए कि किसी को जो याद है पुराने डिटेल्स किसी लड़ाई के बारे में कुछ भी उन्हें नोट करें और वो कोर्ट में भेजें. That the materials which had been collected should be recited in the royal hearing and whatever might have been written down afterwards should be introduced into the novel volume as a supplement, and that such detail is on account of the minuteness of the inquiries and the minutiae of affairs could not then be brought to an end should be inserted afterward at my leisure. Being relieved by this royal order, the interpreter of the divine ordinance from the secret anxiety of my heart, I proceeded to reduce into writings the rough drafts. कहते हैं फिर he is basically saying how he wrote this Ain-i Akbari. उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसे क्रॉस चेक किया, and then he wrote them down. I gathered the accounts of many events. Great pains too were taken to procure the original or copies of most of the orders which had been issued to the provinces from the accession up to the present day. तो जो भी orders वगैरह दिए गए उनकी copies को भी हासिल किया गया. I also took much trouble to incorporate many of the reports which ministers and high officials had submitted. By these means I constructed a reservoir for irrigating and washing the rose garden of fortune, the Akbari. Abul Fazl basically describing कि कितना डिटेल में जाकर उन्होंने इसके लिए इंफॉर्मेशन को अकबरनामा लिखने के लिए इन इंफॉर्मेशन को हासिल किया. Okay, so this is about Ain-i Akbari. Okay, that is the end of this chapter. And then we will move to the last chapter, that is the Kings and Chronicles. We will still be learning more about the Mughal period. The 8th and 9th chapters both are related to the Mughal period. Here we will get to know most of the details. अभी तक हम मुगल एम्पायर के एग्रेरियन इकोनॉमी, रूरल सोसाइटी की बात कर रहे थे. We learned about the peasants, जमींदार्स एंड स्टेट, उसके बारे में हमने जाना. एंड ये इंफॉर्मेशन में कहाँ से मिलती है, Ain-i Akbari, उसके बारे में जाना. बट ये है 16th-17th सेंचुरी. अगर मुगल पोर्ट्स की बात होगी, बट इसमें वी विल नो दी डिटेल्स एंड हाउ द एम्पायर स्टार्टेड एंड द डिफरेंट रूलर्स एंड व्हाट दे डिड. This is what we are going to learn in the next chapter. This is chapter number 9 that we will be discussing in the next class. So today in chapter number 8, the peasants, Zamindars and the state has come to an end. And the last topic that we were discussing was about Ain-i Akbari. So that's all we discussed.